Yeah, so I guess we're live. Yes. Wait for people to join in. So, how are you? Hello. How are you? I'm good. What's happening? Nothing. Just weekend going on, and that's on end. Yeah. From tomorrow, the office again. Yeah, I also have school from tomorrow. I have like tests coming up, so Oh. I've been studying. So where do you live? I live in Erandvane, Kothrood. Okay. Yeah, far from where you Mm-hmm. live. Yes, actually. Opposite. Very opposite. Hi guys, I think some people are joining in. How are you? Can Okay. you hear us? Can you see us? Just Just let drop us the know. hi so that we can know that you are with us. Yeah. Hi, Preeti. Hi. So, how was your weekend then, Rama? Weekend was good. Like I said, I've just been studying. Okay. So Yeah. it's just, yeah. So yeah, like, um, so at work, uh, how far is your work? How long does it take for you to get to work? Okay, so my work in the office is quite chill. No workload at all. Monday to Friday, go to office, have fun over there, do work, come back to the PG. I live in PG, and yeah, that's how my work days go. And on weekend, most of the weekend, I sleep at my PG. I love to sleep. Nice. Okay, so Yeah. I guess a lot of people have joined in. So yeah, I Yes. think we'll Yes. start now. Yeah. So yeah. Yeah, so hi guys. Good evening. So today we're meeting um, for this session. It's telling people I have diabetes. So a lot of people have been asking us, how do you get started with that? So Manisha, do you want to give the brief introduction of what we're doing today? Yes. Hello, everyone. Good evening. And yeah, I hope that I'm audible to you. So basically, I'll give the short intro about myself. So yeah, I live in Pune, and I'm an employee at MNC company, that's pharma company, and I'm diabetic since last 6 years. And yeah, so about the Blue Circle Diabetes Foundation. So it's like a community of our people, like diabetic people, where we are the people with all kinds of diabetes, and we run different kind of activities where we can help each other. And we do such funny sessions at every Sunday. And it's been more than 2.5 years, that's basically 3 years, and we have done 200 sessions so far. And yes, we are everywhere, every social media, so you can stay connected over there so that you can never miss any updates. So
Yes, stay connected with us. Okay, hi And guys. also, I'm Rama. I am 16. I'm a type 1 diabetic. I also live in Pune, and I think I've been a part of Blue Circle Foundation for for a long time. I guess like it's been a while since before COVID started. So yeah, go ahead, Manisha. I think I cut you off. I'm sorry. and it's okay. I was just saying ki, yeah, we both are like quite fortunate. We are here as a part of Blue Circle Diabetes Foundation. And so, yes, our today's topic, as you all know, that we will be discussing how we tell people, our family, friends, or close friends, or other people, how we do manage or how we tell to them, and what kind of reaction we get from them. So, we'll be having funny conversation. And so, yes, keep your questions ready. We are free to answer to your questions. And Yes. so please do stay connected with us. We will be Yeah. having fun. Yeah. So Manisha, I think my first question to you is how old were you when you were diagnosed with diabetes, and how did you sort of accept that you had diabetes at that age? Okay. Mm, when I was 16 years old, at my 10th class, boards were coming and I was diagnosed and admitted to the hospital. And suddenly, doctor said that you are no more a normal teenage girl. You are now type 1 diabetic girl. And I was like, what is this? It's just the diabetes. I was not so concerned about it, but my parents were quite shocked and bit nervous, stressed. लाइक इतने कम उम्र में कैसे हो गया इसे, लाइक मम्मी पापा को तो आइडिया नहीं है ना कि क्या रहता है क्या नहीं है, टाइप 1 डायबिटिक क्या अलग है. एंड डॉक्टर्स यूज टू जस्ट प्रिक मी विथ नीडल्स, यहाँ से सलाइन वहाँ से सलाइन, डेली इंजेक्शंस वगैरह. सो मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा था कि ये वो, बट आई वाज़ नॉट अवेयर कि ये क्या है मेरे साथ, क्या हो रहा है. एंड लेकिन मैं मम्मी-पापा के रिएक्शन से देख सकती थी कि मतलब कि बहुत टेंशन में है, लाइक स्ट्रेसफुल है. सो यस, आई वाज़ अ 16 इयर्स टीनेज गर्ल, जिसके बहुत सारे एम्बिशंस थे, ये करना था. Hmm. तो फिर वो है. I think it was the same with me. मैं 8 साल की थी, so I was half the age I am right now. And I don't think मुझे ऐसा properly पता था कि मुझे क्या हो रहा है, because I was very small, so I didn't really know what was happening. So I think I was just going with the flow, whatever I was told I was doing. So I think my acceptance that I had diabetes, I think, came through that only, because my parents, they created like a very normal atmosphere for me. They didn't like create a big fuss out of what was happening. So बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं किया. सो आई थिंक इसलिए वो ऐसा रूटीन में हो गया मेरा, मतलब कुछ अलग ऐसा फील नहीं हुआ मुझे कभी ही, इसीलिए एक्सेप्टेंस मेरे लिए ऐसा काफी आसान गया. सो Hmm. लाइक नाउ दैट like when you were diagnosed, like how did you go about telling people कि अरे मुझे डायबिटीज है, मुझे ऐसा ऐसा हुआ. So how do you like go about telling people, like उस टाइम Um, पे when you were first diagnosed कैसे बताया? Actually, when I was diagnosed, I was like okay to tell people, and I've never really felt to hide it from people or friends to anyone. बट मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि नहीं बताना है, नहीं बताना है. लेकिन मुझे लगता था क्यों नहीं बताना है. तो Hmm. फिर like I never felt actually, but and as far I know, it's very important to people to know about this rare fact that is type 1 diabetic. And I was like, नहीं मुझे बताना है, सबको अवेयर करना है इस type 1 diabetic के बारे में. And so in the school, I started telling my friends that I was diagnosed, I was admitted, मुझे type 1 diabetic हुआ. तो मेरे फ्रेंड्स का रिएक्शन था, यार इतनी कम उम्र में कैसे हो गया, तू सच बोल रही है ना, या डॉक्टर का रिपोर्ट्स मिसमैच हो गया, क्या बोल रही है तू. ऐसा उनका रिएक्शन था.
बट उतना ज्यादा फर्स्ट नहीं हुआ कि लाइक ये वो गॉसिप्स क्रिएट तो कुछ नहीं हुआ। तब मैं हाँ। छोटी थी तो फिर मैंने ज्यादा बताने की कोशिश भी नहीं की। तब मैं खुद डील कर रही थी कि आई हैव डायबिटीज, ये हाई लो होता रहता है। एंड हम्म। हाँ, अब मेरा एक इंसिडेंट है मेरे रिलेटिव के साथ। जब मैं डायग्नोज हुई थी ना, तब मेरे जो मौसा जी है, मेरे अंकल, तो वो कह रहे थे कि ये इसकी मम्मी की गलती होगी जो अपनी बच्ची को नहीं संभाल पाई। लाइक ही वॉज ब्लेमिंग माई मदर, माई पेरेंट्स। राइट। कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उस टाइम मैं शांत थी क्योंकि तब मेरे पास ना आंसर्स नहीं थे देने के लिए। तब हम्म। लेकिन वो अभी भी मुझे याद है एंड मैं अभी भी उनको ना अच्छे से रिप्लाई देती हूँ कि नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, कि मैं या ही खुद गॉड गिफ्टेड हूँ, मैं ही गॉड की बेटी हूँ जो मुझे दिया है। लाइक कोई ऐसे बोल कोई रहा फनी। है कमेंट्स में, कोई बोल रहा है आई फील आवर पेरेंट्स वर मोर वरीड देन अस। मुझे बहुत सही लग रहा है बिकॉज मतलब तब टाइम पे आई वाज लाइक अच्छा हो गया तो ठीक है, चलो अब क्या मतलब कर भी क्या सकता है। पर माय मॉम शी वाज लाइक she went all like she went to my school and she created like a book, like a ऐसा पूरा ऐसा बुक क्रिएट किया था उसने। और वो सारे टीचर्स को मेरे दे के गई थी। बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि मतलब सब लोगों को मालूम था मेरे स्कूल में कि अरे इसको डायबिटीज है, क्योंकि मतलब कभी मुझे कुछ हो जाता तो उनको वो अवेयरनेस था। सो लाइक कमेंट्स में आप लोगों को भी बताओ लाइक हाउ डिड यू गाइज टेल your friends in the initial stages when you were diagnosed? It's like everybody I think has like a very funny story, at least one, Yeah, like many instances. yeah. So What kind of reactions you got from your yeah, relatives? yeah, Yeah. please let us know. Yeah. And also I want to know how you treat your hypos. ये मुझे बहुत Ah, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, how you treat. that's interesting. Yeah, I think I always over treat my hypos. That's what I do. So same here, even I. so uh, you mentioned before that to me that you had the hostel experience, you were in the hostel when you Yes. were learning. So like how did you like what was that experience like? Because I'm living at home, I haven't like stepped out of the house at all, or lived alone for that matter. So like how did you manage it then, and did you tell people when you were in hostel, and were the reactions any different than when you had experienced before? Okay. Like I wouldn't say that I was worried about my diabetes को लेकर. And after my schooling ended, I was in a college 11th 12th. तब I told my roommates that I have a diabetic. I'm a diabetic girl, so please keep checking on me. अगर लो हो गई तो please दे दो मुझे. तो they were Hmm. quite supportive. And बहुत बार तब मेरा ना फर्स्ट टाइम हाइपो हुआ था। लाइक पूरा हॉस्टल इतना डर गया था कि मनीषा को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों कर रही थी ये। तो फिर तब वो बहुत डर गए थे, लेकिन उन्होंने भी रिसर्च किया इस बारे में कि क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। लाइक होगी लो हो गई तो फिर उसको चेक करो, देखो। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किया। आई एम रियली थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स हु हेल्प मी ड्यूरिंग माई लो फेजेस. So yeah, Yeah. my lifestyle changed. And then after my 11th 12th, I was in university where I told my entire class that I am a diabetic and I'm unique. They were like, yes, you are diabetic girl and you are unique girl. So yeah, I Right. was very chill about that. And when we were when we used to plan about the trips, तो उन वो ना मेरे मेरे हिस्से के ना हाइपो ट्रीट्स रखते थे। लाइक उनके पास Hmm. मेरे चॉकलेट्स रहते थे, लाइक एक्स्ट्रा जूस चॉकलेट्स, बार बार से पूछना, मनीषा तू ठीक है ना, चल सकती है ना हाँ हमारे साथ। लाइक दे वर वेरी चिल, लाइक तुझे आना ही होगा, हम है तेरे साथ। लाइक दे वर क्वाइट सपोर्टिव. हाँ, आई थिंक मेरे लिए भी बताना हैज ऑलवेज बिन बेटर, बिकॉज पर्सनली मैं मेरा हाइपो किट वगैरह कैरी करने के बारे में बहुत इररिस्पॉन्सिबल हूँ। लाइक हार्डली मेरे पास कुछ मेरा हाइपो ट्रीट करने के लिए होता है। दैट्स व्हाई
I just tell my friends कि no, I am very irresponsible with this. You have to carry something for me at all times. So like इसलिए I am never worried कि अगर मैं बाहर किसी के साथ गई हूँ और मुझे हाइपो हो गया है तो लाइक अरे मतलब क्या करूँ अब मैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास होता है. हाँ हाँ. तो तुम्हें कब मतलब ऐसा लगा कि अ, मुझे अब डायबिटीज़ है इसलिए मेरे मेरा फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने में कभी लाइक हैज़ डायबिटीज़ इंटरफियर्ड विद दैट, लाइक तुमने प्लान्स बनाए लेकिन अब कुछ डायबिटीज़ का हो गया है तो अब मैं फ्रेंड्स को कैसे बताऊँ अरे मैं आ नहीं सकती, तो उसमें कुछ ऑकवर्डनेस वगैरह कुछ फील होता है और वो कैसे डील करते हैं आप? Actually, for that case, I never felt awkward. As I said earlier, that my friends were quite supportive and they used to help me. अगर कुछ प्लान बनता है, like recently हुआ हमारा प्लान बना ट्रैकिंग का, एंड मैं ना बहुत हाइपर हो गई थी. लाइक आई वाज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड आई वाज नॉट दैट एक्साइटेड फॉर गोइंग टू द ट्रैक. बट फिर मैंने उनको इन्फॉर्म किया ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने ट्रेक का पूरा प्लान कैंसिल किया मेरे लिए. एंड दे टुक मी टू नियर बाय प्लेसेस वेयर आई कैन चिल ओवर देयर. तो लाइक राइट. I really got the supportive friends. They really helped me so far. I'm like blessed to have these kinds of friends. Yes. सो तो डू फिर यू अगर थिंक लाइक हाँ, ऐसा अगर बताया हो भी नहीं गया था? है ना हाइपर. हाँ हाँ हाँ, मेक सेंस. किसी ने हाँ. बहुत इंटरेस्टिंग या. क्वेश्चन पूछा है. कभी आपको मतलब डायबिटीज हुआ है इसीलिए कभी ऐसा कास्ट आउट हुआ है का फीलिंग हुआ है क्या, मतलब डिड एनीबडी लाइक इफ डिड एनीबडी kind of typecast you about being diabetic and how did you handle it? So yeah, I think मेरे लिए question था. So I'll just answer it. I personally don't remember being typecasted being a diabetic, but because I've actually been very lucky. My school was very open about it. They never made me feel like uh, different about it. But obviously, there were some teachers who were like, "Are you sure you can do this?" And I sort of just always turned it into a lecture कि नहीं मुझे है डायबिटीज पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये खा नहीं सकती या फिर मैं दौड़ नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है. तो वो मतलब मेरे फैमिली फ्रेंड्स और लोगों ने मतलब आई मेक इट क्लियर कि मुझे डायबिटीज है लेकिन मैं अलग नहीं हूँ. मेरा पार्ट का ये बहुत मेरे लाइफ का ये बहुत छोटा हिस्सा है. एंड वो मतलब मेरी बॉडी को मैं सबसे ज़्यादा जानती हूँ, इसलिए मतलब आई कैन हैंडल डूइंग दिस स्टफ. सो आई थिंक दैट्स हाउ आई यूजुअली डेल्ट विद इट. Okay. या. And now one question from my side, like did you ever feel to hide it from people, like नहीं मुझे इसको नहीं बताना है, इससे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है, ये ऐसे जज करेगी मुझे या करेगा. Like have you ever felt like that? आई थिंक इनिशियली बहुत पहले पहले में आई वॉज अ लिटिल बिट लाइक अरे कैसे बताऊँ, ये बहुत बड़ा फस क्रिएट हो जाएगा मैं बताऊंगी तो. Hmm. और मतलब eventually I think slowly I think it got too tiring to like hide whatever I was doing, and eventually I just like went with the flow and I was like nahi ab hai to hai, I can't go on hiding this stuff. So eventually Hmm. जैसे मैंने और लोगों को बताया वो ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया मेरे एनवायरनमेंट, और Yeah. मेरे फ्रेंड्स भी बहुत मतलब क्यूरियस बन गए, एंड देन इट बिकेम इजी टू टेल मोर पीपल एज आई टोल्ड पीपल. सो Yeah. या, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है. डिड यू एवर फील peer pressure to do anything or eat anything that would impact your blood sugars? अच्छा क्वेश्चन है. Yes. Yeah. या, गो So अहेड. Rama, tell. You tell नो नो first. यू. अच्छा ओके ठीक है. पीयर प्रेशर मतलब एक्चुअली मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि आई डोंट लाइक गोइंग अगेंस्ट व्हाट अदर पीपल आर गोइंग अलोंग विद. मतलब मुझे मतलब किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत एंग्जाइटी आती है. तो मतलब पक्का देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर आई वाज लाइक अरे यार मैं ये मेरी शुगर अब ऑलरेडी हाई है,
फिर अब मैं ये खाऊंगी या ये करूंगी तो और बढ़ने वाली है, सो शुड आई डू इट और नॉट? सो आई हम्म थिंक डेफिनेटली ऐसा पीयर प्रेशर टाइप्स हुआ है, लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ऐसा किया कि आई वाज लाइक मैं आपके साथ चलती हूँ, आई विल ईट अ बाइट, पर ज़्यादा नहीं, मतलब इतना भी पीयर प्रेशर मुझे मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि मतलब नहीं मुझे ये करना ही चाहिए ऐसा। व्हाट अबाउट हाँ यू? हाँ, मुझे तो आज भी बहुत पीयर प्रेशर होता है कि यार इससे खाऊं ये खाऊंगी तो मेरा हाइपर हो जाएगा, या फिर मैं हम्म आगे के काम नहीं कर पाऊंगी, ये होगा वो होगा, लाइक बहुत सारा प्रेशर आता है मुझे। बट हम्म फिर अनदर साइड ऑफ माइंड इज दैट पॉजिटिवनेस कि नहीं मैं खाऊंगी लेकिन थोड़ा सा खाऊंगी आगे का। हम्म लेकिन क्यों मैं अपना जो इच्छा है जो उसको क्यों मारूं मैं प्रेशर की वजह से? लाइक मैं बहुत सोचती हूँ फिर खाना खाती हूँ या जो कुछ हम्म खाना वो खाती हूँ। एक्चुअली ना मेरा क्या खाने से एकदम बढ़ता है कि बेसन बेसन चीला वो खाने से हम्म इंस्टेंटली बढ़ जाता है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो अवॉइड करती हूँ, बट फिर भी थोड़ा खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बेसन चीला। लाइक हम्म। सो यस। और एक क्वेश्चन है कि लाइक तुम्हारे जो फ्रेंड्स है, सो लाइक हम्म व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देम टू ट्रीट यू लाइक, मतलब अब सपोज तुमने बता दिया कि अरे मुझे डायबिटीज है, तो लाइक व्हाट वुड द आइडियल रिएक्शन ऑफ योर फ्रेंड्स बी कि अच्छा ठीक है तुम्हें डायबिटीज है तो अब मैं तुम्हें ऐसा ट्रीट करने वाली हूँ, सो लाइक वो तुम्हारा आइडियल क्या है, मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कि अब मैं ऐसा ट्रीट करूंगी तुम्हें, सो हाँ वो हाँ, कैसा? अब तो लाइक जब भी मैं किसी को बताती हूँ कि मुझे टाइप 1 डायबिटिक है, मैं लो होती हूँ, हाई होती हूँ, हाई होने की वजह से मैं बहुत डिप्रेस रहती हूँ, लाइक हैवीनेस रहती है। एंड मैं उनको एजुकेट करती हूँ इन बारे में कि क्या करना चाहिए तुम लोगों को। अगर मैं लो होती हूँ तो प्लीज़ मुझे हम्म लाइक कुछ मीठा दो खाने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा ऐसा कुछ दो। तो वो हेल्प भी करते हैं, लेकिन फिर अगर कुछ मैं ऐसे लाइक मेरा फेस ना क्वाइट ऐसे इनोसेंट है ना, तो वो मुझे बार बार से बोलते हैं यार बेचारी बेचारी। सो आई हेट दैट वर्ड बेचारी, इवन हम्म दो उनका इंटेंशन कुछ अच्छा ही होगा, बट आई रियली हेट दैट वर्ड बेचारी बिकॉज आई एम या नॉट बेचारी। हाँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि हाँ सिंपैथी देते हैं कि ऐसे हम्म ये नहीं कर पाएगी वो नहीं कर पाएगी, लाइक ये मुझे बहुत लाइक अच्छा नहीं लगता। बट फिर भी उनका इंटेंशन कुछ गलत तो है नहीं ना, इसलिए हम्म। एक्सेप्ट कर लेती हूँ। एंड मैं सो बताती भी हूँ मेरे पेरेंट्स को भी बताती हूँ कि आई एम अ नॉर्मल गर्ल, सो प्लीज ट्रीट हम्म मी लाइक अ नॉर्मल गर्ल, एंड दे डू ट्रीट मी लाइक देयर नॉर्मल डॉटर। इवन माई फ्रेंड्स डू ट्रीट मी लाइक अ नॉर्मल फ्रेंड, बट जरा एक्स्ट्रा सपोर्टिव हो जाते हैं मेरे लिए कि हम्म इसको है तो फिर हमें भी थोड़ा रहना चाहिए अलर्ट अवेयर। So yes, same हम्म। question goes to you. सो आई थिंक मेरे लिए मैं जब भी बताती हूँ कि यार मुझे डायबिटीज़ है, स्पेशली मेरे स्कूल में वगैरह, आई थिंक हम्म मैं सबसे पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मेरा डायबिटीज़ ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है कि ये मैं ऐसे ऐसे डील करने वाली हूँ। मेरी मुझे आपसे एक्सपेक्टेशंस बस ये है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे अगर लो हो गई मेरी शुगर बहुत, मैं हम्म अगर बता नहीं पा रही हूँ मुझे क्या चाहिए, तो बस हम्म मतलब इधर मेरे पेरेंट्स को कॉल करो या फिर मैं बता सकती हूँ कि मेरी शुगर बहुत लो हो गई है, तो मुझे बस लाइक थोड़ी शक्कर दे दो या फिर जस्ट हेल्प मी इन केस ऑफ क्राइसिस, अदरवाइज मैं खुद का मैनेज कर सकती हूँ। और एज फार एज वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, मतलब um, अगर आपको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए तो आई थिंक वो पहले से ही क्लियर कर देना आई थिंक इज़ मच बेटर yes 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 rather than just expecting it from people. So I yeah, think वो as important है. as So Snehal commented, empathy not हाँ, sympathy. yeah, I Yeah, love that. only empathy That's not sympathy at all. Yeah. I think yeah, our friends and family should follow that motto: empathy, not Yes, sympathy. yes. Yeah, definitely. So are you on like a Mm. pump or a sensor, or what are you using currently? Okay, I manage my blood sugar levels by glucometer, and I use pens, and like I'm Right. habitual to them. So yeah, I want
to continue with So then that I only. think I can answer this question. So actually, it's my mom who's asked this. She's asked, "How do you explain your pump and sensors to people? Do you hide it or are you okay with it?" So, pehle I was kind of conscious about that. I won't lie. I was like, I didn't really wear sleeveless t-shirts or anything because I had my sensor on. But Yeah. I've grown comfortable with my pump and my sensors, and I joke about it a lot because my pump actually looks like a bomb. You know, it actually looks like a Mhm. bomb. So like, ये Yeah. मेरा bomb है. I joke about it, and then again I turn it into a lecture कि यार ये मेरा insulin pump है, ये मुझे ऐसे ऐसे insulin देता है. और most of the times people are very curious कि यार ये कैसे काम करता है, दिखाओ ना. So then I just give them a small Mm-hmm. demo कि यार ये ऐसा चलता है, इधर मेरी sugar दिखती है. And people are mostly like very fascinated with that kind of stuff. So it becomes easy. Like honestly, people my age, they get very excited about like electronics in general. So ऐसे robot हूँ मैं, ऐसा बोल देती हूँ मैं. Okay. बस Actually, yeah. one question is there from your mom, actually, Sonali Dole. Hello, Yeah. auntie. She was asking, like, to you that any incidents which made you feel wish I don't have a diabetes, but I didn't have diabetes when hanging out with friends, etc. Hmm. Have you ever felt I like that? think आई थिंक सब लोगों का ऐसा कुछ तो एक इंस्टेंस होता है कि अरे यार अगर ये नहीं होता तो मैं ये कर सकती थी. पर आई Yeah. थिंक वो वही मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइक अरे यार आई हैव टू थिंक सो मच बिफोर आई डू एवरी सिंगल थिंग. मतलब कभी कभी वो ज़रा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ना कि अरे यार मतलब Hmm. हर चीज़ के पहले वी हैव टू थिंक अ लॉट राइट. सो Yes. तब तब भी मतलब ऐसा होता है. वरना Hmm. लाइक ऐसा बहुत बार नहीं लगता मुझे. सो Okay, okay. और एक क्वेश्चन था, what did you learn in these days like that you might not have learned at this age. मतलब डायबिटीज के वजह से क्या आपने सीखा है जो आपके एज के अलग लोगों को शायद सीखा नहीं होगा. सो लाइक ऐसा कुछ है क्या? Yeah, I have learned quite more things from having a diabetes. Actually, हम्म. I have been more productive, and हम्म. my planning skills have definitely improved. And everything must be carefully planned in a way a non-diabetic would not do. And हम्म. even I leave the house, I must ensure that I have a whole host of items with me, like hypo kit, planner, सब कुछ. Like I'm totally productive and yes, एकदम से ठीक ठाक डिसिप्लिन मैनर में रहने लगी हूँ. हम्म. Because all kudos go to that diabetic. I'm a diabetic, yes. And yes, I guess years of this has allowed me to have a better idea of planning and problem solving. हम्म. Yes, and I've been a आई थिंक multitasker girl. वो मल्टीटास्किंग तो मेन है. मतलब क्या 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 कर लेते हैं हम. बहुत कुछ और कर लेते हैं. मतलब हाँ. आई थिंक मेरे लिए मतलब सेल्फ कंट्रोल और मतलब बैलेंसिंग सब कुछ इज व्हाट डायबिटीज हैज टॉट मी. जो मेरे एज के अलग लोगों को शायद मालूम नहीं होगा. मतलब इसी वीक का इंस्टेंस था. मैं स्कूल में मेरा लंच होता है. मतलब मेरी स्कूल लंच देती है और ऐसे चार पांच हम्म. चीजें होती थी. सो उस टाइम में पास्ता था, राइस था, सब्जी थी और रोटी थी. सो सारे मेरे एज के लोगों ने ऑब्वियसली पास्ता के तरफ गए. पर आई वॉज द ओनली चाइल्ड हु वाज लाइक नहीं मैं रोटी और सब्जी खाऊंगी क्योंकि मेरी शुगर 230 है. सो माई Okay. फ्रेंड एक्चुअली आस्क्ड मी कैसे, क्यों, मतलब क्यों. सो आई थिंक वो सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है ना कि नहीं ये मेरे लिए अभी राइट नहीं है इसलिए मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं कुछ अलग खाऊंगी. वो वाला डिसिप्लिन लाइक यू सेड कि जो सही है इस टाइम में वो वही करूंगी. ऐसा आई थिंक वो डिसिप्लिन बहुत लोगों में मेरे एज के नहीं होता है, लेकिन वो डायबिटीज हम्म. ने मुझे सिखाया है. सो Okay. किसी और ने पूछा है कि लाइक
अगर डिड यू एवर फील कि अगर मुझे डायबिटीज़ नहीं होता तो मैं लाइफ में बहुत अच्छा कर लेती अब तक, मतलब इट वुड बी बेटर, माई लाइफ वुड बी सो मच बेटर विदाउट डायबिटीज़, ऐसा कभी कुछ लगा क्या? नहीं, एक्चुअली मुझे कभी नहीं लगा, एंड दिस डायबिटिक थिंग, आई नेवर फेल्ट दैट दिस इज बैरियर फॉर मी, क्योंकि बचपन से मुझे ना मेडिकल फील्ड में एंटर करना था। तो मैं अभी मेडिकल फील्ड में ही हूँ, लाइक आई एम अ फार्मा, आई एम फ्रॉम फार्मा बैकग्राउंड। सो नेवर फेल्ट दैट कि इस वजह से ये हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। लाइक डायबिटीज मेरी वीकनेस है और वही मेरी स्ट्रेंथ है। लाइक दिस थिंग मेक्स मी क्वाइट यूनिक, सो आई एम हैप्पी टू हैव अ डायबिटीज। आई लव दैट, डायबिटीज़ मेरी वीकनेस है और वही मेरी स्ट्रेंथ है, वाह। यस। वेरी नाइस, वेरी नाइसली सेड। हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ मतलब मैं बहुत अच्छा करती, बेटर करती, ऐसा कभी मुझे लगा तो नहीं है। मतलब हाँ। ऑब्वियसली, अरे आई मतलब जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था कि अभी इस इंस्टेंस में नहीं होता तो अच्छा होता, ऐसा फीलिंग आता है, लेकिन आई वुड हैव डन बेटर इन लाइफ, ऐसा कभी मुझे लगा नहीं है, क्योंकि लाइक आई सेड बहुत छोटा हिस्सा है डायबिटीज़ मेरे लाइफ का, इसलिए जो कुछ लाइफ में होता है वो मेरी वजह से होता है, तो ऐसा कभी लगा तो नहीं। सो आपका डाइट क्या है, ऐसा कोई पूछ रहा है, मतलब डेली डाइट में आप क्या क्या करते हैं? ओके, मैं तो अभी पीजी में रहती हूँ, तो लाइक मैं खुद बनाकर भी खा सकती हूँ, बट मैंने मेस लगाई है, तो फिर मेस में तो मैंने उनको यही बताया कि मुझे कुछ अलग मत दो। जो अपना इंडियन फूड है ना, पोड़ी भाजी वरण भात, वही मेरे लिए डाइट रहेगा। हाँ। ब्रेकफास्ट में तो पोहे जो रहता ही है, लंच में तो चपाती सब्जी दाल चावल, सेम गोज टू डिनर। इवनिंग स्नैक में लाइक मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इवनिंग स्नैक की, तो मैं वो अवॉइड करती हूँ। हम्म। एंड या पार्टीज अगर नाइट आउट हुआ तो वहां पर भी चपाती सब्जी दाल चावल। आई नेवर फेल्ट कि मुझे इसके अलावा भी कुछ खाना चाहिए। एंड हम्म। हियर आई एक्चुअली डोंट लाइक फास्ट फूड लाइक पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राइज। आई डोंट रियली लाइक देम, सो या। राइट। आई थिंक मेरे डाइट में भी कुछ ऐसा मैं अलग करती नहीं हूँ, प्रॉबेबली करना चाहिए लेकिन करती नहीं हूँ अभी तो। आई थिंक वैसा ही मेरा रेगुलर डाइट है, कुछ अलग तो नहीं है। यस। और एक क्वेश्चन था, हु और व्हाट इंस्पायर्स यू? सो अच्छा क्वेश्चन है यार, हाँ। थोड़ा थिंक करना पड़ेगा। आई थिंक आई ऑनेस्टली डोंट नो। वेरी नाइस क्वेश्चन, हु और व्हाट। आई थिंक यही ग्रुप हमारा जो है, उसमें इतने या। इंटरेस्टिंग लोग हैं जिन्होंने कितना कुछ किया है। आई थिंक उनसे ही इंस्पिरेशन मिलता है, मतलब हर हर बार हम मिलते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है, तो यस, आई एंड थिंक इतने दैट सारे इंस्पायर्स सेशंस मी। हुए हैं ब्लू सर्कल डायबिटीज हाँ। फाउंडेशन के, तो ये क्वाइट इंस्पायर करता है, जो कि हमें आज इंस्पायर करके आज आज हम वर्कशॉप होस्ट कर रहे हैं, राइट रमा? यस। एंड पक्का या। इंस्पायरिंग वाला बोला तो मैं खुद को इंस्पायर करती हूँ कि मनीषा यू कैन डू दिस, मनीषा यू कैन गो देयर। यस मनीषा, मनीषा इज इंस्पायरिंग मनीषा ओनली। दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, आई लव इट। यस, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ डील करना है, तो यस मैं खुद को इंस्पायर करती हूँ। एंड एडिशनली तो ये फाउंडेशन तो है ही। एंड यस, एक्चुअली नूपुर इंस्पायर बहुत करती है। मैं बताना अरे चाहती हूँ बहुत मेरा बहुत। एक्सपीरियंस स्टार्टिंग का, कि जब मैं सोशल मीडिया पर आई थी तो मुझे लगा था अगर मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ तो मेरे जैसे भी कोई होंगे ना। तो मैं इंस्टा पर सर्चिंग करती थी कि कोई होगा टाइप 1 डी, टाइप करती थी तो बहुत सारे लोग मिलते थे। तो ऐसे करते करते ना मुझे नूपुर मिली, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनको मैसेज किया, फिर उन्होंने मुझे ग्रुप्स में ऐड किया, फिर वहाँ से बहुत सारे ग्रुप्स में मैं ऐड होते गई। फिर वहाँ से मुझे लगा यार मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। एंड यस, दीज यू ऑल पीपल्स इंस्पायर मी। सो या, kudos राइट। go to us, we diabetic. और ये डायबिटीज ने आपका इमोशनल क्वेश्चन, मतलब कुछ कैसे अफेक्ट किया है डायबिटीज ने आपके इमोशंस, आप कैसे हैंडल करते हो, या फिर Emotions, अ, oh god.
इमोशंस आर लाइक बहुत बार मुझे ना रोना आ जाता था कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं बहुत थक जाती हूँ, ये इंसुलिन ले लेकर, हम्म। ये चेक कर कर मेरी हाई हो रही है, लो हो रही है। लाइक मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, फिर मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ कि मैं ही क्यों, क्यों मैं ही। फिर बाद में लगता है कि यार मैं क्यों, इसलिए कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है करने की, मैं हम्म। कर सकती हूँ, मुझ में वो स्ट्रेंथ है करने के लिए। अ, तो यही बहुत ज़्यादा मुझे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बट मैं खुद को मना लेती हूँ, कन्विंस कर लेती हूँ कि नहीं यार तू कर सकती है। लाइक हाँ, ऐसे ही चलता रहता है मेरा, ऐसा ज़्यादा कुछ ऐसे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज आई डोंट ओवर थिंक अबाउट दैट कि ये हम्म। करना होगा वो। आई जस्ट डोंट ओवर थिंक, आ रहा है थिंकिंग तो मैं तुरंत बंद हो जाती कि नहीं मनीषा, स्टॉप इमेजिनिंग, डोंट ओवर थिंक, दैट्स इट। हाँ, या ओवर थिंकिंग तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बाप रे। और इमोशनल क्वेश्चन मेरा जो क्या अफेक्ट हो रहा है, आई थिंक वो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ही ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि वो सफ़र करते हैं। सो मैं बताऊंगी नहीं। ओके किसी ने रमा, मुझे आई डू हैव अ पूछा है। क्वेश्चन। हाँ, पूछो पूछो। ओके, डू यू टेक इंसुलिन इन पब्लिक और यू जस्ट बी मेरा शाय तो ओवर अब देयर? मेरा तो पंप है अब, तो आई थिंक हाँ, ओके, पब्लिक में दे देती हूँ मैं, आसान हो जाता okay, है। can you just tell me more about the pump as I'm not a pumper? या सो पंप मतलब बेसिकली ऐसा मिनी इतना साइज का होता है, और उस पर बटन्स होते हैं, और वो एक पैच होता है जो आपके स्किन, मतलब वो आप इंसर्ट करते हैं, और उस पैच के थ्रू आप इंसुलिन देते हैं। सो इंसुलिन देने के लिए आपको बस एक, जितना इंसुलिन देना है वो आपके पंप पे एडजस्ट करना है, और बस दे देना है। सो इन मतलब पब्लिक में आपको इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब पेन यूज़ करना नहीं पड़ता। सो आई थिंक इसीलिए पब्लिक में देना बहुत आसान हो जाता है। Yeah. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डू यू फील एनी चेंज इन बिहेवियर फ्रॉम योर सिबलिंग्स एंड कजिन्स टुवर्ड्स यू व्हेन दे रियलाइज्ड अबाउट योर डायबिटीज? मतलब के Yes, कजिन्स ने yes. कुछ अलग ट्रीट किया क्या कजिन, आपको? हाँ कजिन्स का तो नहीं, उतना नहीं है कांटेक्ट मेरा, बट हाँ मेरी एक छोटी बहन है जो कि रिसेंटली 10th स्टैंडर्ड में है। तो जब से उसको पता चला है कि व्हाट इज टाइप 1 डायबिटिक, तो खुद बहुत पढ़ती है डायबिटिक के बारे में। वो बार बार हम्म। पूछती है दीदी आप ठीक हो ना, आपको ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या। एंड मेरी फैमिली ऐसी है ना कि अगर मुझे मीठा खाने नहीं पड़ रहा है, लाइक मैं नहीं खा सकती, तो घर पर हम्म। कोई भी नहीं खाता। लाइक इवन दिवाली के टाइम पर भी कोई मीठा नहीं खाता, कोई बनाता नहीं, कोई लाता नहीं। एंड हम्म। मेरी जो छोटी बहन है ना, अगर वो खुद खाती है चॉकलेट्स, एज शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, सो वो मुझे बोलती हम्म। दीदी खाना है क्या, थोड़ा सा दूं क्या, कुछ नहीं होगा, आपको पसंद है नहीं है चॉकलेट तो खा लो। लाइक शी इज लाइक, हाँ वो बहुत सपोर्टिव है, वो हेल्प भी करती है मेरी। तो मेरा उसका बॉन्ड हम्म। अच्छा है इस मामले में। हाँ, आई थिंक यू आर कम्प्लीटली राइट। मतलब वो बॉन्ड जो है आपके सिबलिंग्स में, वो बढ़ जाता है, बिकॉज दे आर यस। ऑल्सो लाइक वरिड अबाउट यू, सो दे विल आस्क यू। और मतलब वो वो मतलब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। मतलब आई डोंट थिंक एनीबडी रियली पिटीड मी, और लाइक सिंपैथी किसी ने दी नहीं, आई डोंट हम्म। थिंक। पर ओके। मतलब एवरीबडी वाज वेरी क्वेश्चनिंग, मतलब अच्छा ऐसा है क्या, सो अब मैं क्या करूँ? आई थिंक हम्म। वो एटीट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड टू गेट व्हेन यू टेल समबडी दैट यू हैव डायबिटीज। मतलब वो सिंपैथी कभी, आई डोंट थिंक किसी को ज़्यादा पसंद आती है। आई थिंक व्हाट वी एक्सपेक्ट, एज प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार, कि अच्छा अब मैं क्या करूँ, लाइक हाउ डू आई हेल्प? आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन दैट वी ऑल वांट। आई एम जनरलाइजिंग, बट मतलब मुझे तो मतलब अच्छा तुम्हें है तो अब हाउ डू आई हेल्प, मतलब ऐसा ही चाहिए होता है मोस्ट लोगों को। डू यू या हैव एनी सिबलिंग, रमा? आई हैव अ ओल्डर ब्रदर, ही इज Okay. 3 4 years older. How's your bond then?
अरे it's nice. Good bond. लाइक ब्रदर मतलब सिस्टर टॉम एंड जेरी टाइप रहता है ना. yes, exactly that. ओके. मतलब अच्छा है वो, ही इज वेरी नाइस. पर मतलब भाई है मेरा, तो जो हो सकता है वो बॉन्ड है मेरा उसके साथ. सो So Rama, uh, what kind of sports do you love to play or enjoy? आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है. मैंने स्विमिंग ट्राई किया है, बैडमिंटन ट्राई किया है, जिमनास्टिक्स ट्राई किया है, रोप मल्लखांब किया है मैंने. पर मतलब ऐसा Okay. कुछ स्टिक नहीं हुआ. मतलब आई डोंट थिंक मैं ऐसा कमिट करने के लिए तैयार थी. सो इसलिए आई डोंट प्ले लाइक एनी स्पोर्ट राइट नाउ. पर मैं जिम को जाती हूँ. सो आई ट्राई टू गो Okay. टू द जिम as frequently as I can. Uh, पर हाँ, मैंने खो खो भी खेला है. आई एंजॉयड खो खो एंड Oh. बैडमिंटन द मोस्ट. व्हाट अबाउट यू? अभी तो कुछ नहीं खेलती बट हम्म. पहले मुझे ना फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था. फुटबॉल, क्रिकेट, हम्म. वॉलीबॉल. या तो अभी कुछ नहीं. जस्ट एक्सरसाइज. डू एक्सरसाइज, डू योगा. दैट्स इट. हम्म. So like, um, what do you think you could have like, अगर आपने बताया नहीं था किसी को कि मुझे डायबिटीज है, तो हाउ डू यू थिंक दैट वुड हैव अफेक्टेड योर लाइफ नाउ? मतलब if you, मतलब why do you think it is so important to tell people कि मुझे डायबिटीज है? या it's really important to aware people about type 1 diabetes because ये ऐसा केस है ना कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ, अगर मुझे लो फील हो रहा है, मैं हाइपो हो रही हूँ एंड तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, खुद को ट्रीट नहीं कर पा रही हूँ, तो लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ इसे टाइप 1 डायबिटिक है. मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें लिखा रहता है कि मनीषा कदम शी इज अ टाइप 1 डायबिटिक. वहाँ पे लिखा भी है कि हाइपो होगा तो क्या ट्रीट करना चाहिए, हाइपर के क्या सिम्टम्स है, हाइपो के क्या सिम्टम्स है. तो फिर जनरली क्या होता है कि अगर लोगों को पता है कि हाइपो होने के बाद मुझे कैसे इसको बचाना है, लेकिन कैसे ट्रीट करना है, तो वो कर पाएंगे. एंड किसी को ऐसे लगेगा नहीं कि यार कि मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई. तो फिर लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू ट्रीट हाइपो एंड हाइपर. एंड सबको पता भी होना चाहिए व्हाट इज टाइप 1 डायबिटिक. एज राइट. हाँ. एग्जैक्टली. मुझे भी ऐसा लगता है. मतलब आपके सेफ्टी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आई थिंक above your safety also, when you tell more people about diabetes, कि वो भी घर जाके अरे सोचेंगे कि अच्छा डायबिटीज क्या होता है, तो वो रिसर्च करेंगे. और फिर मतलब फ्यूचर में अगर वो किसी को मिले कि जिनको हमारे जैसे सिम्टम्स थे, फिर वो भी मतलब अवेयरनेस इन जनरल अवेयरनेस. जितना यस. रेज होगा, उतना डायबिटीज होना ये नॉर्मलाइज होगा. और फिर जो कुछ भी लोग अब फेस करते हैं, मतलब कुछ लोग बुलिंग फेस करते हैं स्कूल में कि या फिर मतलब इन जनरल हम लोगों की लाइफ मतलब इजी हो जाएगी अगर यस. जितना अवेयरनेस रेज होगा. और लोग बाकी लोगों की लाइफ में भी it will affect other people's lives too. Yeah. Okay, and one more question to you, Rama. Like, Hmm. what kind of advices would you give to someone who has just been diagnosed with diabetes? I think in relation to this topic, I think don't be shy of telling people that you have diabetes. It is not something that you have to be ashamed of. It is not in your hands. It is Yeah. something that you have, but it is not who you are. So make sure to never make diabetes your identity. It is a part of you, but it's not who you are, like I said before. So मतलब just you have to accept कि अब मुझे है ये, मैं इसके साथ रहने वाली हूँ. So Mm-hmm. how do I move past that? How do I make it a part of my life? How do I um,
deal with it on a daily basis. Like, वही I think important है, self acceptance. And then in the future you just have to know कि it gets better. पहले तो मतलब rocky होने वाला है. You are मतलब big change in your life है ये, मतलब it is not easy, पर मतलब it gets so much better eventually. मतलब I still have instances where like, oh no, मैंने क्या कर दिया, ऐसे होते ही रहता है. मतलब there's always gonna be like learning experiences throughout with diabetes, because it's kind of like unpredictable. हर बार कुछ नया हो सकता है, लेकिन Hmm. again मतलब just throughout your learning, and it gets better, it really does. What would Yes. your advice be? Okay, first of all, I would say कि just we don't get panic. Hmm. कि पहले ज़्यादा सोचो मत कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया. लाइक आई नो कि Hmm. रैंडम क्वेश्चंस आते रहते हैं, बट आई वुड से कि डोंट गेट पैनिक. एंड मेरा एक ही एडवाइस रहेगा कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू लिव अ हेल्थी लाइफ स्टाइल. And don't let your diabetes consume and restrict you from doing lots of things. With Hmm. careful planning you can do everything you would do this before, and the preparation will eventually become second nature of you finding its way. एंड माइंडसेट ही अच्छा बना लो. लाइक पॉजिटिव माइंड रखो कि अब मुझे हुआ है तो मेरी अभी लाइक डायबिटीज से ना बहुत कुछ है सीखने के लिए, कि आपका ना बहुत प्रोडक्टिवनेस बढ़ जाता है. लाइक प्लानिंग स्किल्स बढ़ जाते हैं, आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल जीते हो, आप अपने खाने पीने पर ध्यान देते हो, आप एक्सरसाइज करते हो. लाइक इट्स लाइक रियली गुड थिंग इफ यू एक्सेप्ट दैट यू हैव अ डायबिटीज. Hmm. एंड हाँ, ऑल्सो मुझे मतलब go ahead, go ahead. yeah, and just remember to be aware of your diabetes, um, and give the information about diabetes to your family, friends, surrounding people. And this is the best advice I can give कि सबको educate करो इस बारे में. हाँ, पर आई फील बाकी लोगों को एजुकेट करने के पहले आई थिंक खुद को बताओ. मतलब बाकी को लोगों को बताने के पहले खुद को बताओ कि अब मुझे है, ये मुझे डायबिटीज है अब. ये मतलब Acceptance is the key. एग्जैक्टली मतलब बाकी लोगों को बताने के पहले खुद एक्सेप्ट कर लो कि अब है ये मुझे, मतलब कुछ और ऑप्शन है ही नहीं Hmm. आपके पास. तो वही Yeah. इम्पोर्टेंट है. यू सेड इट वेरी वेल, मनीषा. Think, yeah, that's the main thing. Yeah. Okay, Yeah. one more question to you. Have you ever felt that this is the hardest thing about having diabetes? Have you ever have the question about this? Sorry, I couldn't hear you properly. Could you repeat it? Okay, hello. Am I audible to you? Yes, now you are. Your voice broke for a second. Okay. So my question was the hardest thing about having diabetes? Ooh, interesting question. Very interesting. Hardest thing तो uh, वो कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ता है ना. मतलब Mhm. आई एम अ बिग फूडी. मतलब मुझे हर टाइप का खाना बहुत पसंद है. मेरी सारी फैमिली को पसंद है. सो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि अरे मेरी शुगर बहुत हाई है, ये मैं नहीं खा सकती, तो वो डिसअपॉइंटमेंट होती है. सो आई थिंक वो हार्डेस्ट पार्ट है. और जब इन द मिडल ऑफ द नाइट जब हाइपो होता है, यू आर ऑलरेडी सो फुल फ्रॉम डिनर, और कुछ खाना पड़ता है. दैट्स आई Uh, थिंक अगेन हार्ड. आई थिंक दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट फॉर मी. yes. What about you? What do you think is the hardest part? I would say the hardest thing about having diabetes is the anxiety. बहुत एंजाइटी Anxiety. आती है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना पड़ता है. तो Hmm. idea of having complications occurring in the Hmm. future वो ज़्यादा concerning रहता है मेरे लिए. And अगर हाँ मेरे if I have a had a bad day,
In terms of high blood sugars, I can find myself dwelling on the consequences that could Hmm. occur in the future. तो regarding बहुत anxiety रहती है, like हाँ ऐसे worst cases scenarios आते रहते हैं दिमाग में. So yeah, Hmm. that's the hardest thing, but yeah, we can deal with that. Yeah. एक मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था लाइक हाउ टू डील विद दिस ओवर थिंकिंग लाइक एंग्जाइटी. तो मुझे बहुत अच्छा Hmm. एग्जांपल दिया था कि Hmm. Manisha, just close your eyes and think like you are in a cage, and in that cage, there's a hungry lion with you, and you both are in Hmm. the same cage. And what would you do? What would be your next action? तो मैंने बोला कि क्या ही कर सकती हूँ, वो भूखा है, मैं उसके साथ हूँ, एक ही केज में, एक ही पिंजरे में, शायद वो मुझे खा जाएगा, मैं मर जाऊंगी. तो डॉक्टर ने बोला कि नो मनीषा, तुरंत आंखें खोल लो एंड स्टॉप इमेजिनिंग कि तुम हो Hmm. वहां पर. लाइक स्टॉप Nice. इमेजिनिंग. या तो लाइक हाँ, ये एग्जांपल ने मुझे बहुत हेल्प किया है. Hmm. I think बहुत important discussion था. I think this was a very important discussion because like a lot of people were so curious कि like कैसे बताऊँ मैं. I think वो बहुत लोगों हम्म. के मन में ये doubt था. I hope कि हमारे experiences I think I hope they helped. And Blue Circle is like the perfect foundation for you to come in and share your experiences because there's so many people out here and like somebody else has to have experienced what you have experienced, and telling more people and just getting it off your chest, it's always gonna help in some way or the other. And मतलब सपोर्ट कायम मिलेगा ब्लू सर्कल के ब्लू सर्कल में. एंड लाइक मनीषा ने स्टार्ट में बोला हर संडे को कौन सा तो नए नए टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. एंड उसमें हम्म. ट्यून इन ज़रूर हुई है. और हमारे बहुत इवेंट्स भी होते हैं लाइक कॉफ़ी कैचअप्स एंड रन्स जहाँ पे Meetups. लोग मिलते हैं and again they share their experiences. And it it personally has helped not only me but it's helped my family so much too because matlab it just I don't know how to explain it, but when you just come together and there's so many people who are floating the same boat as you are, it really helps you feel that you're normal and because you are. जब भी हम like Yeah. it truly makes you feel like you're a part of like such a big community and people are doing amazing things around you. And I think that also inspires us so much. Yes. And I think if anybody else has any suggestions Questions. um, Yeah. for future um, like talks like this, feel free to put them on groups and in comments and just join in tune in every time because it really helps so many people. Yeah. So yeah. Actually, I do have one question to all our Okay. people here who have joined, and to you also, Rama. I really want to know about the hypo, your favorite hypo food, Yeah. like what you But do eat. yes, we do have a group for teens with type 1. it's um it's called Blue Circle Youth. Yes. People, young people should join that. Yeah. I think we should conclude with that. We really hope people we helped people, I think. Yeah. Yeah, So and also for medical IDs, every diabetic should have a medical identity. And so the yes. medical IDs are available in the Blue Circle Diabetes Foundation Yes, and store. I think You can yeah. get your identity cards. Yeah. And All right. also, thank you so much, Nupur. I have like we Rama and Manisha, that's me.
We are fortunate enough to be the part of this workshop, and we Yes. had a lots of discussion regarding Mhm. how to tell people that you have a diabetes, how to deal with that. So yeah, acceptance is the key again. Yes. Yeah. Okay. Yeah, we'll conclude with that. Thank you all for joining in. Uh, yeah. Okay. Thanks. Bye.